हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो के अंदर एक नए मेहमान से आप लोगों को मिलाने वाला हूं। इनका नाम है सौरिक गांगुली। इन्होंने अभी रिसेंटली ही SDE2 प्रोफाइल पर स्विगी को ज्वाइन किया है। तो इस वीडियो के अंदर वो अपना ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और साथ ही साथ अभी तक जितना भी उनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 से 4 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के अंदर, वो भी शेयर करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So Saurik, please introduce yourself. Yeah, sure, Wasim. So I'm Sourik Ganguly, and I have passed out from KIT University in Bhubaneswar in 2018, and yeah, matlab, from college, my main focus was ki wherever I go, right, I'll be creating an impact in that company, not just be just another what you say a small gear in the whole the work industry, right? सो मुझे LNT से एक्चुअली ऑफर था कॉलेज में। आई हैड एक्चुअली आई वाज प्लेस्ड देयर, बट मतलब अगेन वही चीज था कि यार अंदर में था कि यार कि कुछ करना है, मतलब वेरेवर आई गो आई विल मेक माय मार्क, राइट? सो LNT का मैंने डिक्लाइन किया था एंड आई जॉइंड अ स्टार्टअप एंड it was a bootstrap startup when I joined. And मैं जो founders थे basically like we were I think only 10 to 12 people in the team, the whole team, including sales, marketing, development, tech, everything. So वो journey था 1 year का, and that journey was actually I would say a very, as a fresher, right, it was a stepping stone for me. Struggles थे, काफी सारे struggles थे हमारे यार, मतलब it was like कि when we took our our first round of funding, that was a seed fund, like we could see actually कि हाँ क्या impact होता है ये company पे, right? So yeah, I mean, see, that was a very good learning for me, and that was where apart from the developments that I also learned a lot from the business angle as well. वो founder mentality जो होता है, वो Right. चीज I think only people who have worked in a very small startup would understand. So वो एक था experience, बहुत ही अच्छा experience था. After Cruiser, so my first company, the name was Cruiser. It was mainly focused on making driving and all safe, making sure whenever you're driving, you don't get unnecessary calls, messages, texts, and everything, right? So it was more of a driving assistant. After Cruiser, I joined Topper. I think many of the people might have heard about Topper. It Right. was an edtech company, and it still is now actually. But at that time when I joined, it was an independent company. That was before the acquisition of Byju's. And वहाँ था Hyderabad गए, again new city, everything new. And वहाँ पे यार I think the seniors were very supportive. I got to learn Android, and वहाँ पे जाके एक छोटा स्टार्टअप से यू गो टू मिड स्केल स्टार्टअप, तो वो जो ट्रांजिशन होता है, राइट, you get to learn so many things together basically. So let's say मैं जैसे when I was in Cruiser, I used to just see as an I used to see myself as an individual contributor, क्योंकि भाई एंड्रॉइड टीम बस 2 लोग थे, तो you can understand कि कितना ही हो सकता है, right? But when I went to Topper, it was like कि एंड्रॉइड टीम में at least 15 लोग थे, and we all were working on different modules on the same application. So there I got to learn कि हाँ मतलब ऐसा होता है, टीम में ऐसा काम होता है, चीजें सेग्रीगेट ऐसी होती है. एंड दैट वाज आल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस. वहां पे इन टॉपर बेसिकली क्या हुआ था कि आफ्टर वर्किंग ऑन द मेन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, I started working on Flutter there, and that was a very good thing there. वहां पे I got to work, so I was given the freedom to work on and experiment on different technologies. So वो था, I got to work on Flutter, and when I was working on this Flutter, so I'm not sure if many people would have heard about this application in Topper called Topper Answer app. So it was basically focused on for students. Let's say students को कुछ भी doubt आते हैं, right, and they want the answer at that point of time itself. They cannot wait, right? Because if you have a question, you get the answer that time, वो आपके mind में engrave हो जाता है. तो उसी चीज को फोकस में लाके वी हैड क्रिएटेड दिस एप्लीकेशन कॉल्ड टॉपर आंसर, कि whenever you want whatever doubt you have, just type the doubt and you'll get the answer there itself. वो था like
वहाँ पे my product manager and I were very good friends. So apart again there also, apart from development, I also got to learn more on the product development side as well. So product का भी थोड़ा idea होना कि ऐसे ऐसे काम होता है. you know Before you, let's say, launch a product, before you launch a feature in a product, you should always do market research. You should always get to know what your users want, right? All these things. टॉपर में भी बहुत ही अच्छा जर्नी रहा. आफ्टर टॉपर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन ओला इलेक्ट्रिक. अगेन जब मुझे ओला इलेक्ट्रिक में मिला था, एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर अ चैलेंज एट दैट टाइम. एंड ओला इलेक्ट्रिक में आई एक्चुअली गॉट टू नो हाउ द होल कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क फ्रॉम द ग्राउंड्स अप. Not so, as an Android developer, we would be working, so in general, Android developers would be working mainly on the Vue UI side, right? Right. Basically, the backend part done by another team, right? Exactly. The backend would be done by another team. And, Right. mobile के अंदर जो hardware है, right? We as an Android developer won't know exactly क्या हो रहा है. हमें तो APIs expose कर दिए जाते हैं and we just, Correct. go through it. You just need to integrate that API in the mobile application. Exactly. So वो था, but in Ola Electric I got to know कि भाई ये जो signals आ रहे हैं ना हमारे, जो फोन क्या जो ये जो API, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो GPS, राइट? GPS कैसे काम करता है इंटरनली, उसका जो हार्डवेयर जो वो कैसे सिग्नल्स भेजता है, राइट? ये सब चीज आई गॉट टू नो एग्जैक्टली. एंड apart from Android development, I got to know a lot. I got to so क्या बोलता है, I got to gain knowledge from the embedded side as well. So ओला इलेक्ट्रिक में पता है मेरा मेन फोकस था कि टेक साइड, क्योंकि टिल नाउ आई हैव हैड अ फेयर आइडिया or I would say a fair share of knowledge from product side, not from business angle. Right. But now I wanted to know I want to go deep in the tech side. And Ola Electric में वो learning मुझे मिला है. And I think these 3 years of my life right now, 3.5, almost 4 years of my life, I have got a fair share of almost most of the things that would be required. And अभी अभी स्विगी में है मेरा नेक्स्ट जर्नी. सो लेट्स सी. हाँ, उसी के बारे में अब बात करते हैं. तो उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, लाइक जैसे आपका कॉलेज पास आउट हो तो अभी तक ओवरऑल जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है सारा का सारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में रहा है, राइट? एम आई राइट? यस. तो जैसे मतलब आपने कॉलेज पास आउट किया, आपके पास वहाँ पे भी ऑफर था, तो जो टेक स्टैक है, आपने एंड्रॉइड और फ्लटर वगैरह में काम किया, ये आपने बहुत पहले ही माइंड सेट कर लिया था कि यार मुझे मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, या फिर आई विल एक्सप्लोर थिंग्स देन आई विल डिसाइड? यस. सो यार सच बात बोलूं तो मुझे कभी एंड्रॉइड में आना भी नहीं था. So I was always interested in AI side. Actually मैं कॉलेज में भी I had I think I had made 3-4 projects on ML. And मेरा मेन फोकस उस टाइम था क्या निकल के बस AI में जाना था, right? And when I joined Cruiser, there also I was like यार मैं अपना my seniors, I told them कि यार मुझे जाना है AI में ही जाना है. But there I was first time I was introduced कि यार एक बार तुम Android ट्राई करो. So I was like ठीक है देखते हैं, है ना? देखते हैं Android में क्या है ऐसा. तो once when I started going inside Android, मुझे लगने लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज है. So and especially Android में ऐसे क्यों लगता है ना कि why would you or why would anyone like Android is or Flutter for that same, I mean Android, iOS, Flutter, mobile development side. आपको रिजल्ट्स खुद आंखों के सामने दिखता है फर्स्ट. एंड सेकंड, व्हेन यू मेक वेरी और व्हेन यू वर्क ऑन वेरी लार्ज एप्लीकेशंस, राइट, आपको दिखता है कि आपका यूजर सामने आपके सामने वो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, और आपको वो खुशी होता है देखने में, बोलने में कि यार देखो वो स्क्रीन मैंने बनाया था, उस स्क्रीन में ये इशू था, उसको मैंने फिक्स किया है. तो वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो आई थिंक एआई साइड. सो इफ यू सी एआई बैकएंड, ये सब ना बहुत क्या होता है कि ऑब्वियसली दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स, बट उनका आपको इमीडिएट वो नहीं दिखता आपको, लाइक आपके आंखों के सामने वो उसके इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट वो चीज आपको मोबाइल डेवलपमेंट में दिखेगा. सो दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मोबाइल डेवलपमेंट इज अ वेरी गुड फील्ड एंड आई शुड स्टे हियर. ओके, तो अब हम आपके स्विगी वाले इंटरव्यू राउंड के बारे में बात करते हैं. तो आई गेस अभी आपने रिसेंटली स्विगी को ज्वाइन किया, करेक्ट? यस. तो सॉरी, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब
एक बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जनरली ये जो क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूँ ना, ये फ्रेशर्स के लिए मायने रखता है। एक्सपीरियंस होल्डर को तो फिर भी पता होता है कि पर्टिकुलर जॉब या फिर पर्टिकुलर कंपनी कहाँ से हायरिंग वगैरह कर रही है। तो आपको कैसे आइडिया लगा कि हाँ स्विगी में भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ? So yeah, so this was actually the second time I have cleared Swiggy. इससे पहले मैं ओला में जाने से पहले I cleared Swiggy at that time. ओके। Yeah, I would say both the times the interview experience in Swiggy has been, I would say, exceptional. मतलब exceptional as in कि बहुत ही अलग टाइप का है वो एक्सपीरियंस, राइट? एंड अलग टाइप का क्यों? द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, राइट, दे आर नॉट लाइक नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस, मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें. एंड दैट वाज व्हाट आई फेल्ट कि हाँ बहुत ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. एंड एट एवरी इंटरव्यू, राइट, the interviewer had asked me at the end of the interview, obviously they have asked me ki what is the feedback for us, how can we improve our interview. So that was one thing that I felt ki ha matlab this is something very वो दिखाता है कि यार इंटरव्यूअर का वो मेंटालिटी दिखाता है. They are always trying to improve themselves. Even the interview process that they are taking, they are always trying to improve themselves. So that continuous जो feedback उन लोग जो loop चला रहे हैं, so that is a very good thing, I think. And I think that should be followed by every organization. Interview experience. So should I say the base, the exact questions that are asked, or what kind of questions can be expected, or the यू कैन लाइक आप एक एस्टिमेटेड या फिर एक सैम्पल क्वेश्चन शेयर तो कर ही सकते हैं, है ना? लाइक मैं ये सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी पे होने वाला था कि लाइक जो इंटरव्यू राउंड्स या फिर कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे होते हैं या नहीं होते, बेसिकली होते ही होंगे आई बिलीव, है ना? yes. So पहला राउंड तो यार हमेशा स्विगी में होता है कि एक आपको मशीन कोडिंग रहता है, राइट? So you will be given some 3-4 APIs and you'll be asked to make an application, and that would be a live coding round basically. So Okay. the interview will be there and you'll be asked to make the app from the starting, right, from scratch. And generally ये होता है कि आप best industry practices follow करो. So अभी Android में for example you have clean architecture, you have MVVM design patterns and all. So आप ये सब follow करो, right? You have to make sure कि the API results that you're getting, all of these are async operations, right? All these things are there. And obviously again if you use the latest technologies, right, for example आपका Compose हो गया Java Android में, right, या फिर आपका Android में coroutines हो गया. So instead of using the vanilla threads, you can simply go for coroutines. So these things are there. If you use these things, these all are brownie points, right? I think that would be the first round. Mota mein that would be the first round. You will be asked to make an application from scratch, and it will be evaluated based on what are the best industry practices that you are following, right? Second round mein hota hai, this is more of a, I would say, Android plus DS algo mixed round, right? So जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा गया था फॉर एग्जाम्पल कि whenever, so I give the variation of the question is कि you are given an array and you have to find the position of the maximum sub array, right, the maximum sub array. So मेरा तो यार, so I have been practicing data structures for quite a long time now, and मैं lead code में बहुत ही करता हूँ, right, just that I don't put it out anywhere क्योंकि I just don't want people but it's always a surprise, right? Okay. So मैं तो क्वेश्चन मुझे बोल रहे थे इंटरव्यूअर, मैं तो उसी में उसको आंसर बता दी कि भाई ये एल्गोरिदम लगेगा एंड इसमें ऐसा ऐसा करना है. Okay. So I was asked to code the question, I coded it immediately, and obviously the interviewer was very happy about it. And yeah, after that Android का जो basic questions होते हैं ना, MVVM वगैरह, how are view models, कैसे इंटरनली काम करते हैं, सर्च में कैसे क्या काम करता है, राइट? फिर आपका हो गया coroutines कैसे काम करता है. सो ऑल दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे हाउ मच यू नो अबाउट एंड्रॉइड, बेसिकली कितना डेप्थ पे आप जा सकते हो, राइट, लाइक दोस. सो क्वेश्चंस लाइक दोस. That was the second round. That's a DS algo plus the Android mixed rounds. Third round would be your system design round if you're going for SD2. Okay. SD1 के लिए ये round नहीं रहता है. So SD1 के लिए you'll be grilled more on the, or let's say for fresher roles, right, you'll be grilled more on the DS algo round. So उसमें for example when I had applied the first time in Swiggy, right, उस time I had applied for SD1 role. So उसमें मेरा system design नहीं हुआ था, but उसमें मेरा जो DS algo round था, right, I was asked a very
what to say, a very small, or I would say a very short concept on Android में कैसे contacts वगैरह सब कैसे store होते हैं, right? It has a proper documentation है उनका. So and also उसमें DS में और ज़्यादा focus किया गया था. The question that I was asked the first time when I had applied was mainly on DP and greedy algorithms. Basically to pinpoint on what topic it was. It was basically traveling salesman problem. So आप SD1 में अगर जाओगे तो you have to be more focused towards the DS algo side. System design आपसे नहीं पूछेगा. If you're going for SD2, will be asked system design, be grilled on that. And यहाँ पे system design में will be grilled, right? Like grilled as in कि आपको पूछेगा कि आप ये बनाओ, right? It will be asked. For example, I was asked to make a true caller variant, right? So आपको auth से लेके end तक कि जब आपका कॉल आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो, right? You have to write all the specs, you have to make a flow chart, you have to what to say, at least theory में you have to design this whole thing कि कैसे क्या काम कर रहा है. And obviously again brownie points would be given if you are following best industry practice, you are following the proper layering structure, everything is there. वो तो है ही. That was the third round, मोटा मोटा system design round, and उसमें grilling होता है अच्छे से SD2 का. Third round, the last round would be your hiring manager round, जिसमें again tech थोड़ा सा तो पूछते ही हैं सब यार hiring managers. And the good thing was कि my hiring manager actually I've worked with him before, so kind of उनको already idea था कि मैं किस पे काम कर रहा था and all, and he already knew about my work. But again since थोड़ा सा gap था तो I filled him up with all the details that I've worked on in Ola and all. So yeah, so ये था मेरा kind of the whole journey. ओके तो अभी मतलब स्विगी में जाने के बाद टेक स्टैक वही है एंड्रॉयड वगैरह या फिर चेंज होने के चांसेस हैं, लाइक क्या मतलब ये हो सकता है ना कि आगे जाके क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिले, ये सब डिसाइड हो चुका है या फिर होने वाला है? नहीं, ये सब डिसाइड हो रहा है. It's still in the process, and I would be staying in Android अभी तो I'll be staying at least for 1.5 years. I'll be staying. I'm planning to stay in Android team क्योंकि यहाँ पे Android के the folks here in Android, right? They are, I would say, so Swiggy is very famous for its blogs, right? आप उनका मीडिया में blogs देखोगे, they have solved so many problems in this whole mobile side, data side हो गया, आपका backend side हो गया. They have solved so many problems, right? So it's famous for its problem solving capabilities, right? And because of its team, and I felt कि ये जो हमारा Android team है ना, it's a very strong team. They know the ins and outs of Android. Like अगर आप उनको बोल दो कि भाई Android में ये करना है, and they'll be able to do it. So that was why so I am planning to stay here for at least a proper 1.5-2 years in the Android team. And उसके बाद maybe I'll see मुझे थोड़ा backend सीखने का मन है. I'll go and see try out new tech in backend. But yeah, my plan is to stay long term here and work with the folks. And it's a world class team, I would say here. Okay, so basically अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो नो डाउट आपका डीएसए तो स्ट्रॉन्ग होना बनता ही बनता है, उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते, राइट? Yes, that's a must. And especially जैसे when I had passed out, I think till 2018 2019 से पहले I would say कि उस टाइम ना डीपी और ये सब used to be a brownie point, right? कि अगर आपको डीपी आता है तो मतलब a lot of DSE, you have been practicing a lot. But अभी ऐसा हो गया ना कि यार DP is a very common thing. हाँ चलो dynamic programming आते it's a very good thing. ठीक है, आता है. Graphs again, these are all a common thing now. So if you want to have an edge, I would say always practice. Geeks for Geeks and LeetCode are your best friends. राइट. हाँ, बेसिकली अभी तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डीएसए की प्रैक्टिस कर सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको गुड लक रहा तो उन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी मिल जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन योर लक एक्चुअली. करेक्ट, यस. सो बेसिकली है एल्गोरिदम्स 20-25 एल्गोरिदम्स है मेन, बाकी सारे क्वेश्चन उसके वेरिएशंस है. If you understand the crux about these 20 to 25 algorithms, you'll be able to, I think, clear most of the questions. राइट. तो लास्ट क्वेश्चन मेरा स्विगी से रिलेटेड यही रहेगा, लाइक SD2 प्रोफाइल पे एक एस्टिमेटेड सैलरी पैकेज वगैरह क्या उम्मीद कर सकते हैं फ्रेशर्स या फिर जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, राइट? So SD2 का I think अभी जो सैलरी पैकेज है, so SD1 का जैसे there is a range, right? आप फ्रेशर से 3 years तक आप SD1 हो सकते हो.
राइट। SD2 का थोड़ा रेंज बड़ा है, इट्स लाइक अराउंड 2.5 से लेके 7 to 8 years तक आप SD2 रह सकते हो. सो करेक्ट। सैलरी रेंज ना वैसी वेरी करता है बेस्ड ऑन व्हाट आर योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. So अंडरस्टूड। I think in Swiggy, the the thing that I felt was कि the unique thing that I felt was basically कि आप दूसरे कंपनी में जाओगे ना तो आपको अपने पुराने दी ऑफर्स वगैरह कंपीटिंग ऑफर्स वगैरह दिखा के आपको नेगोशिएट करने पड़ते हैं. हाँ। स्विगी में ऐसा नहीं है. स्विगी में इट्स मोस्टली डिपेंडेंट ऑन हाउ योर इंटरव्यू गॉट, हाउ वाज योर फीडबैक फ्रॉम द इंटरव्यू. सेकंड वाज व्हाट्स योर years of experience के हिसाब से आपका कितना है basically. So वो चीज, these two things are mainly taken in focus. So this thing I felt was very unique in Swiggy कि they don't just judge based on your competing offers, they judge based on how much knowledge you have and what's your years of experience, right? कि आपके years of experience के हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए, right? So estimated package I would say somewhere around 30-35 से लेके स्टार्ट होता है SD2 का यहाँ पे. It goes up till higher range में चल जाता है. Around if you have like 7-8 years, if you're at the higher end of the SD2, you'll be getting more like 70, more than that maybe, है ना. But again, राइट। all of these depend on how well you negotiate. How good was your feedback, right, from the interviews. और आई बिलीव आपने यहाँ पे लाइक एक बात सही बताई। मैं भी कल या परसों शायद लिंक्डइन पे पढ़ भी रहा था कि कंपनीज में जब हम जाते हैं तो यही आपके कंपटीशन जो कंपनीज हैं वो आपको क्या पैकेज दे रही है वो लोग मांगते हैं, उसका प्रूफ मांगते हैं, देन आपको वो हायर पैकेज ऑफर करते हैं। तो ये आपने अच्छी बात बताई। अगर स्विगी इसको इतनी तवज्जो नहीं देता तो वो आपको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, राइट। Exactly. And I think आपका एक्सपीरियंस, आपको नॉलेज कितना है, आपका कैसा एक्सपर्टीज है और आपको आपका इंटरव्यू का कैसा फीडबैक किया. So these things are taken I would say more into consideration and given more importance other than कि आपका competing offers क्या आप उस पे बताओ मुझे. So that feels कि यार ये क्या हो रहा है ये तो. हाँ, ये मतलब कैंडिडेट के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि यार मेरी काबिलियत पे शक उठा रहे हो आप। मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो कि मुझे उस कंपनी का आप ऑफर दो, दिखाओ, देन मैं आपको इससे ज़्यादा ऑफर दूंगा। दैट ये तो कोई बात नहीं होती, राइट। Especially the candidates who might not be having any offers, right? Even if they are talented, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना यार कि उनको लगता है कि यार दिस इज नॉट गुड थिंग. उनके लिए फिर नेगोशिएशन सही नहीं रहता है. So I think that is a very unique thing that I felt here, and overall I think interview experience was a very great experience. I feel everyone should have at least one interview experience in Swiggy. मतलब it's a very exceptional experience. तो सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चंस को तो हम यहीं ओवर करते हैं। बस मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से क्या सजेशंस देना चाहेंगे फ्रेशर्स को जो इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं और स्पेशली जिनका टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। Mhm. So, if you're planning on going for mobile development, right, be it iOS, be it Android, be it Flutter, I feel कि डीएसए तो खैर मस्ट है. वो तो हम लोग ने पहले ही लाइक डिसाइड कर लिया कि डीएसए आपको राइट। करना ही है. दैट इज you cannot escape from it if you're in computer science. करेक्ट। Second, I would say projects. So institutions में पढ़ना, यूडेमी, कोर्सेरा वगैरह ये सब चलते रहेगा. आप कोई भी एक स्ट्रीम को पकड़ो और उस पर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो. आप वेब डेवलपमेंट में भी हो सकते हो, राइट. मैं वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा कर चुका हूँ. तो मैंने भी वही से स्टार्ट किया था. मैंने पहले उसका बेसिक्स पढ़ा और फिर मैंने उसका प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किया. सो आप जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे ना, आपको तब तक कोई चीज उस चीज का आपको कोई आइडिया नहीं होगा. जैसे आप 1000 पेज का थ्योरी पढ़ सकते हो, बट until and unless you make at least one project, you won't be able to understand कि वो चीज काम कैसे करता है. सो आई थिंक अभी जो हमारा टेक जो इंडस्ट्री चल रहा है ना, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस. एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा अभी ये है, प्रेवलेंट है अभी. सो आई फील कि आप एक स्ट्रीम को पकड़ो, उसको मास्टर करो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ. स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, दिस फॉर फ्रेशर्स, इफ यू आर प्लानिंग ऑन टेकिंग अप वन स्ट्रीम, मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और इवन AIML, राइट. So you make projects on them, you have that practical knowledge, and only then you think कि हाँ मुझे ये एक्चुअली करना है कि नहीं. जैसे मैंने वेब में ट्राई किया था यार, वेब में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है यार, जावास्क्रिप्ट उतना मुझे सही नहीं लगा. बीइंग फ्रॉम अ जावा बैकग्राउंड, I know people, they love JavaScript a lot. There's a fan following, but मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि यार जावा इज, आई फील थोड़ा स्ट्रांगली टाइप्ड है, अच्छा है. अभी जावा से आप कॉटलिन डार्ट में आ जाओगे तो भाई बहुत ही सही है वो.
And राइट especially if people, if anyone is going wants to go towards Android development or mobile development side, तो आप एक नेटिव को तो पकड़ ले, एक नेटिव फ्रेमवर्क आपको मास्टर करना है। आप या तो एंड्रॉइड को मास्टर करो या फिर iOS मास्टर करो। अलॉन्ग विद एग्जैक्टली दैट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क को भी मास्टर करो, या तो फ्लटर या फिर रिएक्ट नेटिव, राइट। सो आई वुड से फ्लटर अगेन, क्योंकि फ्लटर का बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फ्लटर अगेन गूगल बैक्ड है, और अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। React Native is equally, it's equally getting that much importance, but I think Flutter अभी थोड़ा boom करने लगा है। So I would say, go ahead with any of these two, what to say, cross-platform frameworks. तो ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के साथ। फ्लटर का जो परफॉर्मेंस है, अब आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बनाते हैं बट परफॉर्मेंस आपको पूरी नेटिव वाली देता है वो। Flutter is that's what, like, Flutter I've always seen कि भैया हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया मुझे React Native से। So राइट that's why I would say, yeah, आप ये दो फ्रेमवर्क्स का आप रखो नॉलेज, so you'll be in that niche category। मतलब आपके पास ना वो एज रहेगा हमेशा इंटरव्यूज में, या फिर whenever you are applying in a company, you'll always have that edge, two technologies simultaneously and working on them as well। एंड वर्किंग नॉलेज के लिए तो आई वुड से अगेन प्रोजेक्ट्स, और फ्रेशर्स स्पेशली दिस इज फॉर फ्रेशर्स कि आप भाई प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट्स करो, भरपूर प्रोजेक्ट, आप 10 करो 15 करो प्रोजेक्ट्स। आपको जितना आइडिया होगा, आप जितना प्रोजेक्ट करोगे, आपको उतना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपको उतना आइडिया होगा कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली सिस्टम में। सो या आई थिंक दैट वी वुड आल्सो गेट टू लर्न सिस्टम डिजाइन एज वेल। राइट राइट ओके सो आई गेस एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सॉरी। थैंक्स अ लॉट वासन, थैंक्स अ लॉट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो ज़्यादा सोचो मत यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, वहाँ पर भी फॉलो कर लो, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्वेरी हो तो डायरेक्ट वहीं DM कर दो, एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई भी कर दूँगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।